Assalamu alaikum, everyone. I'm Marvin Salim from the Office of Advancement at LUMS, and I welcome you to this webcast for the graduate programs that we offer through Syed Ehsan Ali and Syed Maratib Ali School of Education at LUMS. The School of Education at LUMS was established in 2017, and at present, at the graduate level, we offer two programs. So MPhil Education Leadership and Management, and the other one is the executive variant of the same, so Executive Education Leadership and Management. Now, our goal today is to inform you about what we offer and how you can capitalize in the best possible manner on the opportunities that await you. Today, we'll be talking about the way we have structured these programs, the admission criteria for these programs, and the important dates that you must remember. And also, we will be answering your questions, and basically we will have them answered by our panelists. So I'm truly honored to be in the presence of Dr. Faisal Bari, Mr. Ghazi Taimur, and Ms. Jannat Khan. Dr. Faisal Bari is a professor of economics at LUMS, and he is also the chairman of the board of directors at the Institute of Development and Economic Alternatives, IDEAS. At present, he's also serving as the interim dean of the School of Education. Mr. Ghazi Taimur is a graduate of Harvard University, and he specialized in education policy. At the moment, he is heading the Institute of Education Development at LUMS School of Education. Ms. Jannat is a recent graduate of LUMS, and she is presently associated with Aga Khan University as an executive officer for their Global Quality Teaching and Learning Network. So I'm very, very thankful to all our panelists for taking time out of their busy schedules and joining us today. And without further ado, Dr. Bari, I'd like to start with you. What do you think is the role that the School of Education is playing in the education sector of Pakistan? And also, if you could introduce the School of Education at LUMS to our audience. Bahut shukriya, Amar. Thank you very much. Very kind of you. So the school, the way LUMS has mostly added schools to the university is by looking at the idea of what is a very large need of the country. So हमेशा ये सोचा जाता है कि भाई जब हमने पहला स्कूल बनाया था स्कूल ऑफ बिजनेस SDSB जो है, उसके बाद से फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, फिर उसके बाद साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर लॉ स्कूल और अब स्कूल ऑफ एजुकेशन, हर दफ़ा प्रोसेस वही होता है कि हम सोचते हैं कि इस वक्त ये बहुत बड़ी ज़रूरत है मुल्क में और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हों उसको इस्तेमाल करते हुए हम चाहते हैं कि उस एरिया में किसी तरह कोई इम्पैक्ट किया जाए. सो स्कूल ऑफ एजुकेशन की बातचीत तो लम्स में और लम्स के साथ जो हमारे दोस्त हैं लम्स के, उनके साथ 8-10 साल से चल रही थी, पर आज से कोई 4 साल पहले ये आइडिया फिर के इसका वक्त आ गया था और ये सोचा गया कि स्कूल ऑफ एजुकेशन अब बनाया जाए. और 3 साल पहले शुरू हुआ था. अब हमारा ये 3rd कोहोर्ट अभी आया है यहाँ MPhil का हमारी, मैं उस पर अभी आता हूँ. बेसिक नीड जो फील हुई थी वो ये थी कि आपको पता है एजुकेशन के हालात पाकिस्तान में कैसे हैं. हमारे पास बहुत एक यंग पॉपुलेशन है जिसको तालीम में जाने की और अच्छा तालीम हासिल करने की, मयारी तालीम हासिल करने की बहुत ज़रूरत है. हमारा एजुकेशन सेक्टर अभी भी एडिक्वेट नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा ज़रूर है अभी भी. कोई हम बात कर रहे हैं 200-250 स्कूल है पाकिस्तान में, हम बात कर रहे हैं कोई 2 मिलियन प्लस टीचर हैं इस वक्त मुल्क में काम कर रहे हैं. तो उस पूरे सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए, दैट्स द आइडिया जो स्कूल ऑफ एजुकेशन के पीछे था कि ये स्कूल ऑफ एजुकेशन हम इसलिए बनाने लगे हैं. अब उसमें पहली चीज़ जो ये तो मुहर्रकात थे जो स्कूल में, यानी स्कूल शुरू से ये सोच रहा है कि हमारा इम्पैक्ट लार्ज होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए और अक्रॉस सेक्टर्स होना चाहिए. उसमें पहली हमारी जो सोच थी वो ये था कि क्या चीज़ ये कर सकती है. सो ज़्यादातर स्कूल्स ऑफ एजुकेशन बहुत सारे शुरू करते हैं टीचर ट्रेनिंग से. हमारा ये ख्याल था कि टीचर ट्रेनिंग का एरिया जो है उसमें हम ज़रा बाद में आएंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पे अभी हमें बहुत सोचने की ज़रूरत थी कि किस मॉडल के ज़रिए हम सही इम्पैक्ट कर सकें. उससे पहले हमारा ख्याल था कि हम ऐसा डिग्री प्रोग्राम लाएं
जो एजुकेशन की मैनेजमेंट, एजुकेशन की अंदर जो चेंज और रिफॉर्म के लिए जो चीज़ें चाहिए, उसके लिए लोग उनको हार्नेस कर सके, उनको ट्रेन कर सके, उनको अपग्रेड कर सके, उन्हें वो सारी स्किल्स और एजुकेशन दे सके जिससे फिर वो रिफॉर्म लीडर्स बन सके. तो इसलिए हमने पहले सबसे शुरू किया था यही, जिसे एमफिल का आपने जिक्र किया, एमफिल एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसका मकसद ही ये है कि किसी भी लेवल पे आप एजुकेशन से मुंसलिक हैं, चाहे वो आप टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, हेड टीचर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पॉलिसी मेकर हैं, असेसमेंट में, करिकुलम में, कहीं भी, तो आपको न सिर्फ एजुकेशन की वेयरविदऑल और नॉलेज हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको ब्यूरोक्रेसी, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप और जो बाकी एजुकेशन के साथ चीज़ें लिंक्ड हैं उनकी भी नॉलेज पूरी तरह हो, ताकि आप पूरी तरह से एक लीडर और रिफॉर्म एजेंट बन सके. तो ये ईएलएम का और इसका सारा कोर्स वर्क भी इसी तरह इसको इस्टेब्लिश किया गया. अब माशाल्लाह इसके पहला बैच ग्रेजुएट कर चुके हैं, जिसकी रिप्रेजेंटेटिव आज हमारे साथ भी हैं, जनरल, अभी आप उनसे भी बात करेंगे. और अब हम तीसरा कोहोर्ट अभी एडमिट किया. जब हम, अब मुझे पता नहीं आप अगर चाहते हैं कि मैं साथ ही एग्जीक्यूटिव ईएलएम की भी बात कर दूं, या वुड यू लाइक टू कम बैक ऑन इट? नहीं, मेरा वैसे अगला क्वेश्चन यही होना था आपसे वैसे भी, कि अगर हम एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हमारा ये नया प्रोग्राम है इस दफा, तो और आप अगर से इंट्रोड्यूस करवा दें हमारी ऑडियंस को. अच्छा, तो सो ये जो 3 साल हमने 2-2.5 साल लगाए ईएलएम पे, आइडिया भी यही था कि दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, इसे हम लॉन्च करें, स्कूल की रेप्यूटेशन, उसका प्रोग्रामिंग वो जरा सेटल हो, तो फिर हम आगे सोचें कि इसमें किस तरह की एक्सपेंशन, किस तरह का स्कूल में भी एक्सपेंशन करनी है. तो एक तो हमने अंडरग्रेड लेवल पे माइनर वगैरह शुरू किया, जो अब आगे भी डेवलप होगा, पर वो अंडरग्रेड है. ग्रेड लेवल पे शुरू से, यानी मास्टर्स लेवल पे शुरू से, जब से हमने एमफिल शुरू की थी, बहुत सारे लोग हमें ये कहते थे कि जी जॉब छोड़ के फुल टाइम प्रोग्राम में आना मुश्किल है, क्योंकि ये कई दफ़ा बहुत सारे लोगों के लिए, कई दफ़ा तो ये यंग लोग होते हैं, थोड़े एक्सपीरियंस वाले, वो तो आ जाते हैं, पर बहुत दफ़ा ऐसे लोग भी आना चाहते हैं जो मिड करियर हैं, जिनकी फैमिलीज हैं और जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो अपने करियर के दरमियान में है. तो उसके लिए हमें बहुत सारे लोग कहा करते थे कि क्या इसकी कोई ऐसी वर्जन नहीं है जो हम काम के साथ साथ कर सकें. तो उसके लिए हमने इस साल, अब हम लॉन्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले सितंबर पहली क्लास आएगी, और इस वक्त उसके एडमिशन ओपन है, जो एग्जीक्यूटिव वर्जन है उसी एमफिल ईएलएम की, जो हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है उसी की. सो वो ये प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटिव हम ऑफर कर रहे हैं, ये वीकेंड बेस्ड है, और उसमें सिर्फ एक ड्यूरिंग वीक क्लास हुआ करेगी, वो भी ऑनलाइन, ताकि आपका जो जॉब के साथ साथ आप ये करना चाहें तो कर सकें, अपने आप को, अपनी स्किल्स को, अपने नेटवर्क को, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें, लेकिन जॉब के साथ रहते हुए, ताकि वो जो मुश्किल कुछ लोगों को होती है व्हेन दे आर मिड करियर, वो यहाँ पे ना आ सके. Thank you so much, Dr. Bari, for introducing the programs, और जिस तरह से आपने गाइड किया कि the kind of impact that our school is trying to make in the education sector of Pakistan. Before I go to Ghazi, जन्नत, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा, आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस आज में देख रही है वो भी ये जानना चाहेंगे, व्हाट वाज इट लाइक टू बी अ स्टूडेंट एट द स्कूल ऑफ एजुकेशन. मतलब क्या स्लीपलेस नाइट्स होती थी, क्योंकि काफी सारे प्रोग्राम्स में ऐसे होता भी है, क्या प्रेशर बहुत ज्यादा होता था, या यू वर एबल टू मैनेज इट? हाउ वाज द होल एनवायरनमेंट लाइक? व्हाट वर योर peers thinking about you, about the whole program? Thank you, Amar. So I think I don't want to scare the audience, but sleepless nights to nahi, but I think maybe I was returning to education after 5 years, because I had done my bachelor's in 2013 and had worked for around 5 years. So I was coming back to education after, a bit of a gap, and I was pretty nervous about it. So at least first semester mein, I felt that pressure, because, LUMS ka chahe bachelor's ho ya master's ho, LUMS is a very, an institute that strives for excellence, no matter, which field you are in, be it engineering, be it law, be it economics, or now education, right? So aapko karna to padta hai kafi mehnat. So initially first semester mein, I do remember I felt like I'm always studying, but then I am also, it's my own issue as well कि मुझे बहुत होता है कि बस A आए, तो that's a personal issue as well, right?
So I do know, okay, even if you have other responsibilities, and I do know my friends, who could not put in a lot of hours were also able to, manage, because the faculty is really supportive. और स्पेशली जैसे मैं तो फुल टाइम प्रोग्राम में थी, so it's a very immersive environment. The department, the floor is amazing to sit in and work at. So वहाँ पे बहुत अच्छे study places हैं, and you can study with your peers, you can sit and collaborate on ideas. I think इतने हमने business ideas भी बनाए हैं on that floor. So generally, I think the environment is really conducive to learning. Because you're a collection of people, like-minded people, diversity भी होती है, and still एक aim होता है कि आपने education को किस तरह quality लाएं, किस तरह access लाएं पाकिस्तान की education में. और फिर हमारी faculty was really supportive. So I do know a couple of professors who used to put in a lot of long hours for students who were lagging behind, या जिन students को किसी particular concept में show रहा होता था, तो they would definitely even go beyond their office hours to help out. So it was I think for me it was an amazing experience overall. I really enjoyed it, and very full of learning, full of just experiences of all sort. So, and while we're at it, I would also like to know, how was the market like when you graduated with this program? So what was the situation? Did the degree benefit you as you had expected? Yes, so I took the degree. Actually, I was teaching before I took admission in the program, and I actually wanted to get into more policy planning, administrative side of education, and I think this program was perfect for that. Even though हमारी जो market थी when we were graduating, close to graduation even, abhi we hadn't graduated and COVID had hit the globe, and that was a pretty unprecedented thing. But I think उस point तक SOE does a great job to connect you to the market, to connect you to potential employers. Even through the degree, you are constantly meeting, at least your full-time program है उसमें practicum भी होता है जिसमें I think somebody might talk about it. We get to work with different organizations. जैसे मैंने दायरा तालीम आगाही के साथ काम किया था. हमारी ड्यूरिंग द 2-year degree हम स्कूल विजिट्स वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो आपकी नेटवर्किंग काफ़ी हो रही होती है. Then on site भी networking हुई थी हमारी. In March, I think we were connected to a lot of potential employers, and we gave interviews, etc. And that's how actually I also connected with a couple of potential employers for myself, क्योंकि आपको idea होता है where you want to apply. So I wanted to go into research and policy planning, इस तरह की चीजें. And so unfortunately, while we were giving our interviews and all, COVID happened, and a lot of places stopped the recruitment. But still, at least, I had a job in hand in March before graduation. And in fact, I joined my job in April. So I hadn't even graduated, and I had begun working. But I do know a couple of my friends and peers, not everyone was as lucky because hiring had frozen. But everybody did eventually get hired at good places, at respectable, institutions and organizations. It took a while, but market बहुत है. I mean, that's what I felt. There's a lot of opportunities to apply for, and a lot of scope for the degree. Okay, perfect. Thank you, Chandan. Ghazi, I would now like to talk to you about हमारी audience भी वैसे जानना चाहेगी. What is the main teaching methodology that we employ at the School of Education, and also generally class profile क्या होता है जो हमारे पास students होते हैं? Yeah, thank you, Mar. I'll take a step back in terms of making sure we distinguish between two different programs here, just so that we're not convoluting one program with another. So as you mentioned, कि हमारे पास अभी दो different programs हैं. एक हमारा standard MPhil इसका नाम Education Leadership and Management program है, और एक उसी का executive version है. So I'm going to talk about the executive version first, कि जिसकी teaching methodology या उसका structure है, उसमें हम किस तरीके से करें. Our classes, as we know, just across Lum School of Education, are very interactive, are very engaging, are kind of focused to make sure that my students are at the center of the learning that's happening.
تو اس میں جو ہم نے انشور کیا ہے کہ ایگزیکٹو ایم فل ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ والے جو ہمارے پیڈاگوجی ہے, اس میں ہماری ان پرسن کلاسز ویکینڈس پہ اسکیجولڈ ہیں, جس میں جو آلٹرنیٹیو ویکینڈس میں وی آر ایکسپیکٹنگ کینڈیڈیٹس ٹو کم آن کیمپس اینڈ دے ول ہیو ان کی کلاسز آن دیز ویکینڈس. اس کے ساتھ ایک آن لائن کمپوننٹ جیسے کہ ڈاکٹر فیصل باری نے مینشن کیا ہے, وہ ایک مڈ ویک آن لائن کمپوننٹ ہوگا. جو اسٹینڈرڈ آن دی ادر ہینڈ جو ہمارا ایم فل ہے, جو 2 سال کا فل ریزیڈینشیل جو پروگرام ہے, اس میں اگین دا کلاسز آر all in person, and یہ جو classes ہوں گی again are extremely interactive classes, very similar to the executive MPhil as well, اور اس میں students are going to be present on campus. ایک چیز جو I want to kind of flag up at this point in time is کہ given the recent situation where COVID نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی کی incorporation within education کس طریقے سے بالکل پیڈاگوجی جو ہے, بالکل کلاسز کو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں بالکل ری امیجن کر رہے ہیں ایجوکیشن کو اوور آل. ہر اسکول میں کو ڈفرینٹ انوویٹیو ٹیکنیکس کو انکارپوریٹ کرنا پڑا ہے, چاہے چاہتے ہوئے یا چاہے نہ چاہتے ہوئے, ٹو میک شیور کہ ایجوکیشن ڈزنٹ گیٹ ڈسرپٹیڈ بیکاز آف کووڈ. اس لرننگ کو ہم نے ایٹ دا فور فرنٹ رکھا ہے اپنی پیڈاگوجی کے اندر بھی, کہ ضروری نہیں ہے کہ جو لرننگ ہے اس کی فیس ٹو فیس انٹریکشن کے تھرو ہی اسٹوڈنٹس سیکھے گا یا آن آپ کی سنکرنس کلاسز کے تھرو ہی ہم پڑھائیں گے. وٹ وی آر میکنگ شیور ود ان آر ایگزیکٹو پروگرام اسپیسیفکلی 100% ہماری بڑی فوکس اس پہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو کانسٹنٹلی انکارپوریٹ کر کے اپنی پیڈاگوجی کے اندر افیکٹو لرننگ آؤٹ کمس ہمیں اسٹوڈنٹس کے ملیں, لیکن ضروری نہیں ہو کہ جی سنکرنس کلاسز ہی ہم آفر کر رہے ہوں. So there will be an element of asynchronous content that we're going to be introducing to a large extent within our executive program as well as within our standard one. Lekin executive mein hamara ek jo focus bhi raha hai wo asynchronous or incorporating technology within our kind of pedagogical approaches to make sure ke jis tarike se jis direction mein ab duniya ja rahi hai, especially post COVID, us direction mein Lum School of Education is at the forefront in terms of making an impact within the education space in Pakistan. Certainly, Bilkul. And we have started getting our questions as well. But before I tell you the first question, I would also like to speak to the audience. This session is basically being conducted for you, so that if you have any queries, agar aapka koi sawal hai, koi any confusion with regards to the program, the School of Education, and how you would want to apply, please just write in the comment section and our team will pick it up and we will get your question. We will place that question before our panelists. Okay, so the first question that we have got is from Shafaq, and Shafaq asks, how heavily does the MPhil program rely on research? So Dr. Bari, I would like, I'm going to route this question to you, but I would also want to request you कि अगर आप executive MPhil के बारे में भी हमें बता सकें कि how strongly are we going to focus on the research part? जी شکریہ, دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. اب اس میں 2 یا 3 اینگل سے میں اس کو لوں گا. ایک تو یہ کہ شروع سے ہمارا ایم فل پروگرام, دی آئیڈیا واز دیٹ اٹ شوڈ بی ایٹ دا کاسپ آف ریسرچ اینڈ پریکٹس, رائٹ. سو اٹ شوڈ پریپیئر اسٹوڈنٹس ویری ویل فار موسٹ آف دا ریسرچ ٹولس دیٹ دے نیڈ فار دا ورک دے وانٹ ٹو ڈو. اب اس میں سے کچھ ہیں جو پی ایچ ڈی کے لیے جا بھی رہے ہیں, جانا بھی چاہیں گے, ان کے لیے وہ بوتھ کوانٹ کوال کورسز بیسک بھی ہوں گے اور ایڈوانس بھی ہیں جو الیکٹیو میں بھی لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر لیکن آپ نے الیکٹیوز میں نہیں لینا, آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ مارکیٹ کی طرف فوکس کریں, تو آپ دوسرے الیکٹیو لیں گے. لیکن کور میں ہم اتنے ضرور آپ کو کروائیں گے کہ جو ایم فل لیول آپ نے گریجویٹ کیا اس کے بعد آپ پیپرز پڑھ سکیں, جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کا استعمال کر سکیں, جو آئیڈیاز آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں مارکیٹ میں ان کو آپ صحیح طرح سے آرگنائز کر سکیں, اپنے کام میں بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں, اور ایک ایویڈنس بیس سوچے سمجھے طریقے سے آپ اپنی پالیسیز اور اپنا لائحہ عمل بنا سکیں. سو وہ یوزر تو آپ ہوں گے ریسرچ کے نا, تو اتنا تو آپ کو آنا ہی چاہیے. لیکن جو اس سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ الیکٹیو میں مواقع ہوں گے تاکہ وہ وہاں پہ جا سکیں. ہماری اس کی ایک اور سائڈ میں ایکسپلین کر دوں کہ ہم شروع پہلے دن سے ہمارا خیال تھا
کہ جیسے ہی ایم فل کا اسٹوڈنٹ آئے, چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر سے کام کرتا ہوا آئے یا ڈائیورسٹی کی جنت نے بھی بات کی, ہمارا اسٹوڈنٹ گروپ کافی ڈائیورس ہوتا ہے, کچھ ہوتے ہیں جنہوں نے ایجوکیشن میں کام پہلے نہیں کیا ہوتا, لیکن پہلے ہفتے سے ہم انہیں اسکولوں میں لے جانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ جو ان اے وے سائٹ آف انٹریکشن, جسے ہم اکنامکس میں کئی دفعہ یونٹ آف انالیسس, سو یہاں ہمارا ان اے وے یونٹ آف انالیسس جو ہے وہ کلاس روم ہے, لرننگ کلاس روم میں ہوتی ہے, ٹیچر اسٹوڈنٹ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں ہوتی ہے, تو وہاں اس سے انٹروڈیوس کروانا ہم پہلے دن سے کرواتے ہیں. اور ہمارا ایک پورا کورس ہے آبزرونگ اسکولس کا, جس میں اسٹوڈنٹس وہاں جا کے مختلف طریقے سے کلاسز آبزرو کرتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں ٹیچرز کا, پرنسپلس کا, جو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں, اور بڑے اسپیسیفک کویسچنز اور طریقوں سے اس کو سمجھنے کی, دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ پروسیس ہے کیا, تاکہ انہیں وہ جو آپ جو بات کریں, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دس از دا مکس آف کسپ آف ریسرچ اینڈ ٹیچ اینڈ پریکٹیکل, تاکہ وہ پہلے دن سے اس میں امرس پوری طرح ہو سکے. اور پھر جو غازی نے جس کا ذکر کیا تھا کہ پریکٹیکم کا, وہ بھی یہی آئیڈیا ہے کہ بائی دا تھرڈ سیمیسٹر آپ گروپ کی فارم میں 3 یا 4 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک بڑے پریکٹیکل کویسچن کو جو کسی آرگنائزیشن نے ہمیں دیا ہے, اور اس کی سپرویژن آرگنائزیشن سے بھی ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے اور ایک ایکیڈیمک ہماری سائڈ سے, وہ اس ٹیم کے ساتھ پھر کام کرتی ہے کہ کوئی اسپیسیفک پرابلم جو کسی آرگنائزیشن کو ہو رہی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو, فار پروفٹ, ناٹ فار پروفٹ, ایگزامس کی ہو یا کریکولم کی ہو یا کسی چیز کی بھی, پیڈاگوجی کی ہو, وہ اسپیسیفک پرابلم ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں, ہم ان سے بات کر کے if we feel کہ اٹس اے امپورٹنٹ انف پرابلم, تو پہلا ایک سیمیسٹر اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو اس پرابلم کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے, اس کا لٹ ریویو, اس کی ریسرچ, اس کا بیک گراؤنڈ ورک, انٹرنیشنل ورک, وہ سارا دیکھتے ہیں, اور پھر ایک پورا سیمیسٹر اس آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے اس پرابلم پہ کام کرتے ہیں, تاکہ بائی دی اینڈ آف دیٹ سیمیسٹر وین دے آر اباؤٹ ٹو گریجویٹ they have actually worked on a practical problem, used all the knowledge, research, etc. that they've learnt about, and go into the field with that experience of having tackled something that was a real practical issue for an organization in the education sector. So that's the mix that we are trying to make between theory and practice, between research and what is actually done. اور دونوں میں ٹولنگ آپ کو کرتے ہیں. جنت نے شروع میں کہا تھا پہلا سیمیسٹر مشکل لگتا ہے, پارٹلی وہ مشکل یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ٹالرنس فار کنسیپچل تھنکنگ, فار ریسرچ, فار نمبرز, فار واٹ ایور, کوال کوانٹ, وہ ابھی اتنی نہیں ہوتی, یا بڑے سال سے وہ ایجوکیشن سے باہر ہوتے ہیں, اس لیے وہ نہیں, تو وہ اس لیے وہ پہلا سیمیسٹر becomes a little heavy, requires a lot of effort. But once you get into that, I think students really start enjoying it and benefiting from it a lot as well. Okay, so basically what I understand is کہ ایک ہمارا آپ کا میں ایک چیز بھول گیا, بڑی معذرت قطع کلامی کر رہا ہوں. کیا فرق ہے جو ریزیڈینشیل ایم فل اور ایگزیکٹو ایم فل میں؟ ایٹ دا لیول آف ایمز تو یہی ایم ہے, ایمز میں فرق نہیں ہے, ہم نے دونوں گروپس کو اکوپ کرنا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو والے ہیں اگر وہ کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, تو وی ول بی ویری اویئر آف ہاؤ مچ ٹائم دے ہیو, what kind of work and research will matter more to them, and how to use their own experience جو کہ چل رہا ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے to benefit their education a lot more, right? کیونکہ وہ گروپ جو ہے وہ آلریڈی کام کئی جگہ کر رہا ہوگا نا کسی جگہ, تو اس کو بھی ہم یوز کرنا چاہتے ہیں. whereas ہمارے جو ریزیڈینشیل پروگرام والے ہیں ان کا immersive experience فرق ہوتا ہے. that's a full time fully immersive program, so it will have slightly different pedagogy related to it compared to the executive program. Okay. So but basically what I understand is that even if somebody doesn't have background in research, they can still opt for this program and they will definitely be acquainted with the basic framework, and if they want to they could go on and do some higher level courses in research. امار میں صرف اس میں سوری پھر قطع کلامی کہہ رہا ہوں, ایک چیز ایڈ کر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहां पे भी आप हैं हम वहां आपको मिलेंगे. We will be with you wherever you start from, but we want to make sure you end up at a level where you are very comfortable with research, literature, and whatever is your aim for later work, you're able to do that. तो वहां तक हम आपको जरूर ले जाएंगे. Okay. Thank you, Dr. Bari. गाजी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि हमारी जो minimum requirements that we have established for entrance into both these programs, MPhil में तो even if somebody doesn't have work experience, they are eligible to apply. But if somebody is applying for the executive MPhil program, they need to come up with at least 2 years of work experience. अब जब हम work experience की बात करते हैं, तो exactly what are we looking for? Are we looking, क्योंकि कई दफा हम जब different schools वगैरह में भी जाते हैं और we interact with different teachers, तो उनके back of the mind ये चल रहा होता है अक्सर कि it's probably a teacher training program. तो क्या हम सिर्फ एजुकेशनिस्ट्स को ही चाहते हैं, हम सिर्फ टीचर्स को ही चाहते हैं वो इस प्रोग्राम में करें, या वो लोग जिनकी बैकग्राउंड एजुकेशन में अभी नहीं है या टीचिंग में एटलीस्ट नहीं है, क्या वो भी अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं? Yeah, thank you, Mara. I think that's a really good question, and I want to reinforce the point that you've just mentioned. जी, दो प्रोग्राम हैं. एक प्रोग्राम है आपका एग्जीक्यूटिव एमफिल एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, और एक आपका है जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम जिसकी डॉक्टर भाई भी बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड एमफिल एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम. जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, जो फुल टाइम 2 साल प्रोग्राम है, उसके लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस की नहीं जरूरत, एज यू जस्ट मेंशन अमर. आपको 2 साल की वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है फॉर द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. सो स्टैंडर्ड के लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस भी अगर आपका नहीं है तो दैट्स फाइन, बट यू कांट अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूटिव program if you do not have 2 years worth of work experience. Or Amar, here to answer your question, I'm going to take a step back. जी, यहाँ पे जो work experience जो हमने मांगा है, let's think of it from a degree perspective कि we're looking to make people who are leaders, we're looking to give the education sector people who are very holistically, जैसे डॉक्टर बारी साहब बात कर रहे थे कि different उनको हम skill sets देना चाह रहे हैं, ताकि वो जब जाएं तो वो as leaders, when they work within the education sector, they can make an impact within the overall sector. तो इसके लिए जब when we are asking for work experience, are we saying कि एक लीडर वही होगा कि जिसने सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही काम किया हुआ है और सिर्फ उसने बच्चों को या तो पढ़ाया हुआ है या तो उसने स्कूल को मैनेज किया हुआ है, वो वर्क एक्सपीरियंस अपना लेके आए, या do we open this question up broadly कि वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है? बॉटम लाइन इज कि आपको सिर्फ एजुकेशन सेक्टर का एक्सपीरियंस या सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस या सिर्फ आपको एक स्कूल मैनेज करने का एक्सपीरियंस को हम नहीं कंसिडर करें. दिस इज अ वेरी ब्रॉडली ओपन काइंड ऑफ फील्ड, एंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज फॉर यू टू प्रूव कि द वर्क एक्सपीरियंस दैट यू आर ब्रिंगिंग, द एजुकेशन दैट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड, द ओवरऑल प्रोफाइल दैट you have as a potential educator or as a potential education leader. What are you bringing to the table when you apply, and how does this kind of fit in to your journey in terms of how this executive education leadership and management program will help you achieve what you want to do in the future? So 2 साल का आपका experience किसी भी field में हो सकता है, लेकिन it has to make sense somehow in terms of fitting in well with your journey to become an education leader in the future. So you can be coming from the corporate space, you can be coming from the tech space, you can be coming from any space whatsoever, but it needs to make sense कि आप executive education leadership and management program उस work experience के बाद आप क्यों pursue करें? So, जो मैं आपकी बात से समझा हूँ ये कि मतलब anybody from any background with any work experience, but it does have to make sense, can apply, but that person will have to be looking for a future in somewhere in the education sector. जी जब आप क्योंकि जब भी हम मास्टर्स की एप्लीकेशन इस तरीके से कंसिडर कर रहे होते हैं, तो वी लुक एट मास्टर्स एज अ ब्रिज बिटवीन हु यू आर राइट नाउ, what you want to be, and how this masters will help you become that person that you're trying to be. तो इसलिए जब वो overall holistically application को देखा जाएगा, तो आपने जैसे आपने कहा है, so that work experience coming from whatever field will be relevant, will be something that we will consider, but we're very keen to know how that's going to help you in the future. Okay, perfect. Jannat, my next question is for you. क्योंकि हमें अभी ये वाला question जो है आना शुरू हो गया. अभी जो हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये है कि what does an average day look like when you are an MPhil education leadership management student?
और प्रेशर की बात जो है वो दोबारा आ रही है. So I think I didn't want to say this, but I'm actually the gold medalist for the batch also, for the MPhil ELM batch, right? And my CGPA was 3.97, so out of 4. So my average day kind of, even despite that, by the way. So like Dr. Bari said, ke pehla semester, yes, you really don't know what you're getting into, तो थोड़ा सा एक different होता है. We do have one of our core courses with Dr. Mariam Chughtai, which is Leadership Politics of Change. That's a core course. काफी वो एक intense course है. Then research methods का course आता है. So I do think again your first semester is going to be perhaps tough in terms of getting into the routine. But I do think आपको ऑन एवरेज देखें आपकी क्लासेस चल रही होती हैं. अगेन मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए का नहीं कह सकती, मैं इमर्सिव प्रोग्राम जो फुल प्रोग्राम था 2 years का उसकी बात कर रही हूँ. आपकी क्लासेस चल रही होती हैं, आपको असाइनमेंट्स भी मिल रही होती हैं. You have to do readings, so readings are an essential part of the LUMS environment, right? So readings आपकी होती हैं because हमारी classes are very interactive, and I actually love that about it. It's not going to be कि आप जाएं classroom में, या अगर online भी है या जिस तरह भी है, it's not going to be a slide by slide कि ये है chapter. It's more like building on your knowledge. You're sharing ideas, you're building on already established theories, etc. So it's very interactive. So उसके लिए obviously आपको readings अपनी करके आनी है. So I do think on average आपको अगर मैं कम बताऊं तो 2 to 3 hours तो लगाएंगे. I think 2 to 3 hours अगर आप daily लगा ले should be okay if you can do it with really good concentration and without any distractions, etc. And I think for the full time program again आपको weekend पे भी 5 to 6 hours लगा ले तो अच्छा है. But see, like for me, I really didn't want to waste the opportunity. I many bachelor's I felt like I hadn't applied myself fully. So when I came to the MPhil program, I came with like guns blazing and ready to devote all my time. But despite that, मतलब I think हो जाता है. It's very manageable. मतलब अगर मैं अपना बैचलर्स का एक्सपीरियंस बताऊं तो उससे कंपेयर्ड आपका easier होता है. Bachelor's is more intensive. I think a master's degree is much more manageable because अगर आप smartly work करें, अगर आप अपने time पे readings करते रहें, again अगर आप daily 2 hours भी लगाते रहें, 2 to 3 hours, and you keep up, आप attendance अपनी रखें, try not to miss classes, things like that. So it's not going to be very overwhelming because the good thing is it's not just all theory. Like Dr. Bari said, it's more about practice also, and then refining your own research interests as well. So ये है basically. Thank you, Jannat. और मेरा जो next question है वो Dr. Bari से होगा. Dr. Bari, Saveer is asking if I start my MPhil ELM program at LUMS, would I be given exposure to other platforms? I think he's referring to different schools. That will he be able to go for different courses, pick up from different schools at LUMS? अच्छा अमर, पहले मैं इस पे आने से पहले जरा वो जो जन्नत बात कर रही थी उसी को आगे लेके जाऊं थोड़ा सा कि देखें हमारी क्लास की प्रोफाइल में we have I think 65 to 70% women the rest में एजुकेशन फील्ड जो है उसमें खवातीन वैसे भी ज़्यादा हैं लेकिन obviously university and school is very conscious of being an equal opportunity provider for everyone. Now, a lot of people come to us in the early part or middle part of their careers and lives as well. So they have their families as well. बहुत सारे ऐसे young लोग होते हैं जिनके young बच्चे भी हैं बाकी चीज. The school does its best to support you in any which way it can. लेकिन किसी तरह भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हो या दूसरा हो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता क्वालिटी पे. हम आपको सपोर्ट करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, जितना कर सकते हैं करेंगे. एक्स्ट्रा टाइम ये वो यानी फैकल्टी बहुत टाइम लगाती है, टीएस हमारे टीएफ्स सारी अक्रॉस द बोर्ड और एडमिन
اور स्टाफ जो है वो बहुत वक्त लगाते हैं, लेकिन और पूरी तरह सपोर्ट मिलेगी, पर कॉम्प्रोमाइज नहीं क्वालिटी पे हो सकता, और वो आपको करना ही पड़ेगा. वो आप 2 घंटे लगाते हैं या 5 लगाते हैं, करना आपने है. वो हर बच्चे का जाहिर है, हर यंग एडल्ट का फर्क होता है, उनका स्टाइल पढ़ने का, बाकी चीजें, लेकिन आपको पुश हम जरूर करेंगे कि आपने अपनी लिमिट और उससे आगे जाना है, ताकि ये देखें ना, ये प्रेपरेशन जिंदगी के लिए भी है ना. जिंदगी में भी तो ये सारी चीजें इसी तरह करनी पड़ती हैं ना, कि जॉब कितना टाइम लेता है, जॉब उतना टाइम लेता है जितने जॉब आपने जितना वक्त चाहिए काम करने के लिए. कोई ये थोड़ी पूछता है कि भाई वो 5 घंटे हो गए या 6. तो वो तो काम है ना, काम करना है और उस लेवल पे पहुंचना है जहां आप ये सब चीजें इंटरनलाइज कर सकें. अच्छा, अब सॉरी, अब मुझे भूल ही गया बुढ़ापे का ये भी मसला है. आपने सवाल क्या पूछा था, बताइए. अब सॉरी. जी डॉक्टर बारी, मेरा क्वेश्चन जो था वो बेसिकली ये था कि एक अगर स्टूडेंट जो है, इफ ही कम्स टू लम्स स्कूल ऑफ एजुकेशन, क्या उसको दूसरी स्कूल में कोर्स करने का मौका मिलेगा? ठीक, बिल्कुल ठीक. देखिए, जो एमफिल प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटिव का तो स्ट्रक्चर ही बिल्कुल फर्क है ना. वहाँ पे तो ओवरलैप जो हमारे बाकी स्कूल्स के प्रोग्राम्स हैं, या इवन जो हमारा रेगुलर एमफिल है, उससे नहीं होगा. सो वहाँ पे आपको कहीं और कोर्स लेना तो बहुत मुश्किल है, वो है ही वीकेंड पे. जो रेगुलर एमफिल प्रोग्राम है, उसका भी वी ओनली हैव द अपॉर्चुनिटी टू हैव यू फॉर 4 सेमेस्टर्स, एंड दैट्स लाइक 9 कोर्सेज प्लस द प्रैक्टिकम. हमारा इशू ये है कि ये कोहोर्ट मॉडल है और इसका कोर काफी बड़ा है. कोर यानी वो कोर्सेज जो आपको करने ही हैं अपने कोहोर्ट के साथ, वो शायद 6 के करीब को इस वक्त कोर कोर्सेज हैं हमारे जो आप करते हैं, राइट. सो दैट ओनली लीव स्पेस फॉर 3 इलेक्टिव्स. तो उसमें जाहिर है एजुकेशन के इलेक्टिव टेक प्रेसिडेंस एंड प्रेफरेंस, बट वी डू अलाउ नाउ 1 इलेक्टिव टू बी टेकन in another school. वो हो सकता है स्कूल ऑफ साइंसेस भी, वो हो सकता है STSB स्कूल ऑफ बिजनेस हो, जिनके साथ हमारा ओवरलैप हो. उस कोर्स की रेलेवेंस जो है वो फैकल्टी जरूर चेक करती है कि वो किसी तरह रेलेवेंट है आपके लिए या नहीं, और अगर वो रेलेवेंट हो तो फिर आप वो कोर्स ले सकते हैं दूसरे स्कूल में. ऑडिट अगर आप करना चाहते हैं, ऑडिट का मतलब है कि अगर आप वैसे लेना चाहते हैं या इन एडिशन लेना चाहते हैं. एक है फॉर क्रेडिट, वो अगर आप इन एडिशन कुछ लेना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, आप पे बर्डन बहुत आएगा, बट आई डोंट सी कि क्यों नहीं. अगर आप बहुत बज़ेद हैं तो जरूर करें. तो वो जो 6 घंटे या 5 घंटे जन्नत बात कर रही थी वीकेंड पे, वो 10-12 हो जाएंगे. लेकिन अगर आप ऑडिट भी करना चाहते हैं तो बहुत सारे स्कूल्स वो भी अलाउ करते हैं कि आप क्रेडिट के लिए ना लें, लेकिन आप जाके क्लासेस अटेंड कर सकें, बाकी कुछ काम कर सकें. उसकी जाहिर है कुछ इन सारी चीज़ों की कुछ कॉस्ट वगैरह होगी, बट येस वो पॉसिबिलिटीज है. लेकिन फॉर क्रेडिट विद इन द प्रोग्राम आप एक इलेक्टिव बाहर कहीं ले सकते हैं. Okay, Dr. Bari. Next question जो है, that is from Nasheen Hassan, and she's asking what is decided for GRE as it's we're in the situation of a pandemic. And while we're at it, I would also like अगर हम if you could talk about the whole admission criteria that we have set for the 2 programs. मुझसे ही चाहेंगे ये? जी. Maybe then I could go to Ghazi for the executive MPhil criteria. अगर MPhil का आप बता दें. हाँ जी. So GRE या GMAT, इन दोनों में से एक तो लेना होगा. ऑनलाइन, वो ऑनलाइन ले रहे हैं टेस्ट, इसलिए वो बिल्कुल एक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. वो डेट्स वगैरह आपसे जो लास्ट है अर्ली मार्च की, वो शेयर भी हो जाएंगी. उससे पहले आपने लेना है. वो सिर्फ ये फ़र्क है कि हम GRE और GMAT पे मिनिमम नहीं लगाते. हम देखना चाहते हैं आप कहाँ पे हैं उस लेवल पे, उसका वेट है कुछ, लेकिन हम मिनिमम कट ऑफ नहीं लगाते कि भाई ऑब्वियसली वो वेरी करता है क्रॉस बहुत सारे. देखें ना, ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो बहुत हाई GRE करें लेकिन उनकी बाकी चीज़ें. रिमेंबर, ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू. And that's very important. That's where we try to judge fully suitability for the program and vice versa. क्या प्रोग्राम आपके लिए है, आपकी हेल्प कर सकता है, और क्या आप प्रोग्राम के लिए सूटेबल हैं कि प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हों. क्योंकि आप एक पीयर ग्रुप में आ रहे हैं ना, आप
उस पीयर की लर्निंग भी आपसे लिंक्ड है और आपकी लर्निंग उनसे लिंक्ड है. सो वो चीज़ हम इंटरव्यूज, जितने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं सबके इंटरव्यू होते हैं और उसमें पैनल्स पूरे बैठते हैं, बड़ी डिटेल से हम ये करते हैं ताकि हम वो देख सकें. इसलिए हम GRE पे कट ऑफ नहीं लगाते, लेना आपको पड़ेगा ताकि हम देख सके कहाँ है, उसका वेट भी कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं एक डाइवर्स क्लास आए जिसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हो. तो ये हो सकता है आपका GRE थोड़ा कमजोर हो, लेकिन आप कोई और बहुत स्ट्रेंथ ले आए, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या वर्क रिलेटेड हो या आपकी कोई और एबिलिटी हो, या कोई ऐसा हो जिसका GRE ज्यादा कहीं और थोड़ा सा कमी है, तो वो बैलेंस हो जाए. इसलिए हम वो चीज देखना जरूर चाहते हैं. गाजी, आप एग्जेक्टिव के लिए बात करेंगे? जी भाई साहब, थैंक यू. सो जी, बारी साहब ने मेंशन किया है अभी हमारा जो एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जो एग्जीक्यूटिव एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि हमारा वीकेंड बेस्ड प्रोग्राम है, उसका जो एडमिशन क्राइटेरिया, सो आई विल जस्ट काइंड ऑफ talk through all of these elements. So सबसे पहला पॉइंट इसके आपके पास एक मिनिमम 2 years का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. So if you're a recent graduate or if you don't have 2 years worth of experience, अगर 2 साल से कम है, so please apply for the standard program. दूसरा वही जो भी बात हुई कि 16 years of education, जो एक स्टैंडर्ड दोनों प्रोग्राम्स के लिए जरूरी है. फिर आपने letters of recommendation. So we need 2 letters of recommendation, and third will be an optional one. And then what we need is a GMAT or a GRE score, as Dr. Bari mentioned, for the standard program as well. And then again, we call our selected candidates for an interview where we're able to assess their eligibility for the overall program, और आपकी हमें CV उसके साथ साथ चाहिए. So ये 6 चीजें जो हैं, these are part of our admission requirement for the executive MPhil program. And इसको मैं reinforce कर दूं कि the main difference between in the admission for the standard program versus the executive program is that 2-year work experience. अगर आपका 2 साल का work experience नहीं है, तो you can't apply for the executive program, you will apply for the standard program. ठीक है, thank you so much, Ghazi. And while we're at it, मैं audience को ये बता भी दूं कि the last day, when we talk about regular MPhil, the last day to sit your GMAT is 9th March 2020, and that is also the deadline to fill in your online application. For executive MPhil, the 16th March would be the last day that you can sit your GRE or GMAT exam, and again, that is the deadline for the executive MPhil application, online one. Now we are moving forward to the next question, that is, how many 100% scholarships are provided for executive education leadership and management program, and that is being asked by Mr. Asif. Mr. Asif. So Ghazi, आप ही मेरा ख्याल है क्वेश्चन को आंसर कर दें अगर. जी, जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के में जो हम मेरिट स्कॉलरशिप्स जो हम ऑफर करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ डेफिनेटिव नंबर, बट वी डू ऑफर सम merit based scholarships. In terms of the overall scholarships that are available, या let's say financial aid में मैं standard को भी मैं इसमें थोड़ा सा इसलिए cover कर रहा हूँ कि financial aid जो so merit based scholarships, there are a few that are available for the executive program, and there's a few that are available for the standard MPhil program as well. इसमें एक element आएगा financial aid का, क्योंकि I think that's going to be a question that stems from this particular point. हम executive MPhil में, जो executive MPhil ELM program है, उसमें हम financial aid नहीं offer करते. जो standard हमारा full time program है, उसमें हम financial aid offer करते हैं. So I think ये एक distinction है that people also need to remember. I don't think it's worth kind of giving a exact number कि कितनी number of scholarships इसमें है, कितनी number इसमें. वो merit based scholarships हैं, and हमारी उम्मीद है कि well, we're going to be giving out quite a few merit based scholarships, and we will encourage everyone to kind of come forward and apply. And obviously उसमें जिनका merit list पे नाम आएगा, we will be giving out scholarships over to those candidates. Exactly. Jannat, I'm going to come to you now. Tanya is asking, what skills am I expected to have mastered as a prerequisite for the LUMS regular MPhil ELM program? So, जब आपने join किया था, तो were there any expectations or were there any prerequisites, some skills that you should have mastered before joining the program?
So not really, there weren't no prerequisites, but actually there are no prerequisites when I joined. But I do think, for example, in my bachelor's I had done economics, तो मुझे उससे थोड़ा सा perhaps edge sense में मिल गया कि econometrics में state आप करते हैं, and इसमें research में quantitative data में मुझे help मिल गई. It didn't seem as hard as it might have to some of my peers. But apart from that, honestly, I don't think कोई prerequisites हैं. A prerequisite is just to, again, like Dr. Bari said, you just need to be sincere to, the effort that you put in, and to the effort that, your faculty deserves from you. I also do think being part of a cohort, you owe it to your peers as well, because again, जब interactive इतनी होती है learning, उसमें जब कुछ लोग अपना part नहीं play करते, I do think it impacts आपकी पूरे कोहॉर्ट की लर्निंग इम्पैक्ट करती है, बिकॉज उस तरह की डिस्कशंस नहीं हो पाती हैं, उस तरह का ग्रुप वर्क नहीं हो पाता. सो prerequisite is just to be there fully ready to give it your all, and just take the opportunity, I guess. Okay, thank you Jannat. Dr. Bari, हमारा जो next question है जो मेरे पास, वो it's about के एग्जीक्यूटिव एमफिल की जो क्लासेस हैं क्या वो ऑनलाइन होंगी, और मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिंक करना चाह रहा हूँ सर कि अभी वी आर इन द कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन and we are totally online with regards to our classes and everything. Now, if the situation continues into the next semester, so what is our strategy for that? And if we are talking about that, so how different is an online class as compared to the regular classes that we used to have and we look forward to having inshallah? पहली बात तो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव एमफिल है वो शुरू सितंबर में होगा. जो हमारी क्लास आएगी वो सितंबर में आएगी, और हमें बड़ी उम्मीद है, दुआ भी यही है कि अल्लाह करे उस वक्त तक ये जो कोविड की वजह से डिसरप्शन आई हुई है वो काफ़ी हद तक काबू में आ जाए, रिजॉल्व हो जाए. हमने तो ये जो पिछला सेमेस्टर अभी गुजरा है, जिस वक्त नंबर्स नीचे गए थे बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वेव, तो कैंपस को काफ़ी हद तक खोलना शुरू कर दिया था. क्लासेस ऑनलाइन ही रही थी ताकि डिस्टर्ब ना हो, लेकिन कैंपस को इस हद तक खोल दिया था कि लोग आ सकते थे, वहाँ पे बैठ के जो आउट ऑफ क्लास चीज़ें हैं वो हो सकती थी. कुछ इंटरेक्शन टीचर्स से, अपने दोस्तों से, पीयर्स से, वो उनका शुरू हो गया था. और लैब वगैरह वाले कोर्सेज जो हैं वो तो जाहिर है शुरू करने थे और वो हो गए थे. सो उम्मीद हमें यही है कि सितंबर बाय द टाइम जब ये एग्जीक्यूटिव एमफिल की क्लास आनी है तो ये चीज़ काबू में होगी. एंड अगर थोड़ा बहुत कोई प्रिकॉशंस लेके भी एसओपीज के साथ भी करना पड़ा, वो एसओपीज ऑलरेडी इन प्लेस हैं, तो हम जो वीकेंड प्रोग्राम है वो कर सकेंगे फेस टू फेस. उसमें ड्यूरिंग वीक जो है वो एक ऑनलाइन क्लास है, लेकिन वीकेंड पे आपको पूरा सैटरडे और ज़्यादातर संडे हमारे साथ गुजारना होगा, और वो फेस टू फेस ही हमारा अभी इरादा है. उसका कोई फ़िलहाल कोई वजह नहीं है कि हम ये सोचें कि सितंबर तक भी इंशाल्लाह सितंबर तक कोई ऐसा मसला रह जाएगा कि हम वो ना कर सकें. क्लास हम साइज़ जो है सोच रहे हैं कि 30-35 लोग आएंगे एग्जीक्यूटिव एमफिल में. तो अगर खुदा न खास्ता हमें कोई SOPs बहुत खास लेने भी पड़ते हैं तो उसके साथ भी we can manage that number fairly easily in face to face situation, unless अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन हो कि तालीमी इदारे ही बंद हो या कोई और चीज़ है, उस पे जाहिर है हमारा काबू नहीं है. वो चीज़ तो हम फिर उस वक्त हैंडल करेंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए. जो हमारी रेगुलर एमफिल चल रही है वो इस वक्त बिल्कुल बजा आपने कहा, जनवरी में हमारा नया सेमेस्टर है. लम्स अभी भी कमिटेड है कि जिस हद तक वो खोल सकते हैं खोलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो हम प्रिपेयर ज़रूर ये कर रहे हैं कि हो सकता है ये सेमेस्टर भी कुछ हिस्सा इसका शुरू का ऑनलाइन ही रहे. 11 तक तो वैसे ही हुकूमत ने बंद किए हुए हैं इदारे, 18 से हमारा सेमेस्टर है, तो उम्मीद हमें पूरी है कि किसी हद तक हम खोल सकेंगे, लेकिन उतना ही जितना लोगों की सेहत और ये SOPs वगैरह को जहन में रखते हुए हम कर सके उस हद तक ही होगा. पर सितंबर तक जब तक नई क्लासें आनी हैं दोनों की, मैं दुआगो भी हूँ, हम सभी हैं, और उम्मीद भी है कि ये मसला काफ़ी हद तक काबू आ चुका होगा. बिल्कुल ऐसे ही.
اب ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے فرام راکٹ چودھری. از ماسٹرز نیسسری ٹو اپلائی فار دس پروگرام؟ از دیر اے منیمم 3 CGPA ریکوائرمنٹ؟ اینڈ تھنک میں اس کا آنسر خود ہی دے دیتا ہوں کہ you need to have 16 years of education اب آپ جیسے بھی ہیں from an HEC recognized institution, and there is no minimum CGPA جیسے ہم نے establish کیا. 3 is not the minimum requirement. آپ کا جو CGPA آپ اس کا اپلائی کر سکتے ہیں. پلس اسے ڈاکٹر باری اور غازی نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. LUMS basically takes a very holistic approach when we evaluate your application. So we factor in everything, your GRE score, اور اگر آپ GMAT کے لیے گئے تو وہ آپ کا work experience if you're applying for executive MPhil program, جو بھی آپ کی پریویس اچیومنٹس ہیں آپ کا بیچلرس میں وٹ ایور یو ہیو ڈن, تو آپ کو وہ بیسکلی بیلنس آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر کہیں پہ آپ کا زیادہ بہتر ہے, کہیں پہ آپ نے اتنا بہتر نہیں پرفارم کیا ہوا, تو وہ بیسکلی بیلنس آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اٹس ناٹ لائک دس کہ وی آر فوکسنگ آن ون فیکٹر اینڈ وی آر کنسیڈرنگ اٹ ان آئسولیشن ٹو the rest of the other factors that play a role in your evaluation. بٹ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں غازی, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سب سے سگنیفیکنٹ چیز کیا ہوتی ہے جو بھی ہم مطلب ایز کلوز ایز وی کین گو, جو ہم اپنے آڈینس کو بتا سکیں کہ اس چیز کو اگر آپ پریپیئر کر لیں تو یہ شاید تھوڑی سی زیادہ ہے ہماری نظر میں امپورٹنٹ جب ہم ایم فل کے لیے اپلائی کرتے ہیں, ایگزیکٹو ہو یا ریگولر ہو. نہیں جی, آپ کا جو سوال ہے بڑا چلاک سوال ہے. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جی کیا چیز ہمیں کہنی چاہیے کہ جی ہمارا ایڈمیشن ہو جائے. I think I'm going to go back to the previous point that we were talking about. If I were to give you an answer, I'm not going to go in کہ جی آپ کا GRE ہونا چاہیے یا آپ کا انٹرویو وہ. I would, and this is a subjective view, and Dr. Bari, please aap jump in. Janat, aapka jo bhi khayal hai. I really think there needs to be clarity in terms of why you want this program, why you want to come to an MPhil program, how it's going to help you get to the vision that you have. اب میں اس میں ہم نکالیں جی آپ کی سی وی پہ یہ لکھا ہوگا, آپ کے یہ بز ورڈز آپ نے یوز کرنے ہیں, آپ نے GRE آپ کا اسکور ایسا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں جب آپ کو خود کلیئرٹی ہے اور آپ نے انٹرویو میں آ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے اور آپ کو کلیئرٹی ہے کہ جی میں اس لیے یہ پروگرام کرنا چاہتا یا چاہتی ہوں کیونکہ میرا یہ گول ہے اور دس از ہاؤ دس کائنڈ آف ایوری تھنگ لنکس ان. اگر اپلیکیشن میں دیکھا جائے تو جی ہمارے اپنے انٹرنل ویٹس ہوتے ہیں. That's something that's obviously confidential and we can't disclose that. But I would really highly encourage people to think about why they want to do an executive or a standard MPhil education leadership and management program specifically for LUMS. And when you come and sit in that interview, come with that clarity, come with that vision, so that the panel can see how not only will you benefit from this program, but how we will benefit from having you within our classroom. And I think that's something that I want people to retain, as opposed to worrying about کہ جی ہماری سی وی ایسی ہونی چاہیے یا ہمارے ایپلیکیشن. وہ ساری چیزیں وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں جب آپ کو خود ایک کلیئرٹی ہوتی ہے کہ جی میں نے یہ پروگرام اس لیے کرنا اور مجھے اس لیے یہ ہیلپ اس میں ملے گی. ڈاکٹر باری, I'd ask you to if you would share anything from your wisdom on this topic as well. ہمارا آپ کی اجازت سے غازی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں صرف اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ دیکھیں کیوریوسٹی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے ساتھ جو انٹرویو میں آئیں تو کیوریوسٹی لے کے آئیے. why is this important, how does this help you, and how will it help impact the education sector? What are you curious about in education, right? آپ education MPhil کے لیے apply کریں. It's a terminal degree, right? Yes, some people through here go to PhD, پر وہ اور بات ہے. But basically all MPhils tend to be terminal degrees that allow you to go work in that sector. So now you're making that choice نا, تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ کیوں بھائی, what is it you want to understand, learn, discover in yourself, in others, in the field, and work towards that will have a contribution that is larger than you. آپ کی ڈیولپمنٹ سر آنکھوں پہ we are very committed to it, but ہم چاہ رہے ہیں آپ نے جا کے اور بہت کام کرنا ہے نا, وہ بھی ہمیں تھوڑا سا glimpse اس کا آئے. تو میرے خیال میں that in itself is a very convincing presentation of the self and is important for us to see. So I think I can take the liberty here. میں اپنے audience کو بتا سکتا ہوں کہ جی آپ نے انٹرویو میں خاص طور سے you have to be very well prepared as to what you have been able to do and where you want to see yourself, how you want to make a difference. اور جیسے ڈاکٹر باری نے بھی کہا کہ you have to be curious کہ آگے اب کرنا کیا ہے اور کیا آپ سیکھنے آ رہے ہیں.
ऑल्सो जन्नत, अब आपकी तरफ आऊंगा, हमारा बस आखिरी एक दो सवाल रह गए हैं, बट ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा दफा जो है ना ये बात पूछी जा रही है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन करियर अपॉर्चुनिटीज दैट ओपन अप वंस ए स्टूडेंट ग्रेजुएट। हमने इसके बारे में वैसे काफी बात पहले भी की है, बट मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको ये बता सकें कि इस वक्त आपके रोल्स क्या हैं, और जनरली कि एक ग्रेजुएट के लिए मे बी यू कैन रेफर टू योर फेलोज हु वर विद यू, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा ग्लिप्स दे सकें हमें। जरूर जरूर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक जो डिग्री है आपको, इट प्रिपेयर्स यू फॉर pretty much all roles that you'll find in an educational landscape. So बाकी आप किस डायरेक्शन में जाते हैं आपके इंटरेस्ट पे होगा. So for example, you can easily after doing your MPhil ELM go into an academic leadership position. Curriculum design में आप जा सकते हैं, instructional design में आप जा सकते हैं. For me, for example, मैं initially थोड़े कुछ months मैंने policy planning में spend किया था at the Citizens Foundation. So I was part of their COVID strategy management team, and I was part of one of their core programs that they created for COVID management for their own students, right? So, for example, education interventions, जो थी उनकी policy planning, strategizing, etc. उस तरह की चीजों में जा सकते हैं. जो अब मेरा रोल है आगा खान में, it's basically जितने भी आगा खान के educational institutions हैं globally इस वक्त, they operate in 8 countries, 8 to 10 countries in East Africa, and Afghanistan and the UK and Pakistan. So in all the educational institutions, हम basically हमारा network जो है, network of quality teaching and learning, we oversee their quality, how professors are engaging with pedagogy, with training them, etc. And now, especially due to COVID, there's a lot of focus on blended digital learning. So I work for the Office of Provost, और उसमें basically मेरी इस वक्त position academic leadership / administration में है, and with a lot of monitoring and evaluation, etc. Right? So basically, again, बहुत सारे fields हैं. I do have friends from my batch जो कि they went back into teaching as well. So they were teachers, A-level teachers भी थे, O-level teachers भी थे. They've gone back to their schools, and now they're able to participate in their schools with a different perspective, having all this theoretical knowledge and having all this practical knowledge as well. But I think pretty much काफी scope है careers का. आप within instruction भी जा सकते हैं, language medium of instruction इस तरह की research में जा सकते हैं, and from administration to leadership roles वो भी open होते हैं to you. Understood. Thank you so much, Jannat. मैं अब इस point पे ये भी बताना चाहूँगा कि SOE is offering 30 minutes consultation sessions for to the applicants for any queries that they might have. All you have to do is to book that session with them. You will have to write to them at soeadmissions@lums.edu.pk. And now, thank you so much, Ghazi. Thank you so much, Dr. Bari and Jannat, for taking time out, being with us today. And I am certain कि अब हमारे जो applicants हैं, prospective applicants, they're pretty sure as to how getting enrolled in these two programs can actually help them or benefit them have more career and professional and personal growth. Or before we sign off, I'd like to remind you once again for regular MPhil, the last day to take your GRE and GMAT exams is 9th March, and that is also the deadline to fill in your online application. For executive MPhil, आपने 16th March तक अपनी GRE या GMAT exam जो भी आप देना चाह रहे हैं, you should have taken it by then. And that is also the deadline for your online application filling in process. So that's pretty much it. Thank you so much once again. Thank you to our audience, and thank you to our viewers. And we look forward to getting your application, and we look forward to seeing you at LUMS.